You're tuned into Community Roundup with me, Aditi Lamba. Yesterday, the Consulate General of India, New York and TV Asia hosted a community outreach and interactive session with U.S. Department of State diplomats in Hindi language training. Held at the premises of TV Asia, the event features several prominent Indian organizations as well as community leaders, along with the consulate's delegation elaborating on Hindi language training in the U.S. and its prominence on a global platform. Let's take a look at highlights from the event, Empowering South Asian Culture and Language in the Greater Diaspora. Promoting the reach and prominence of Hindi language and Indian culture, the event featured many influential personalities from the community and consulate's Indian official, along with the U.S. Department of State diplomats who are currently in Hindi language training for their next placement in India. With an open discussion platform and interaction, many addressed the importance of sustaining Indian languages in the United States, urging the greater community for their support towards cultural engagement and interaction. I'd like to welcome everybody very briefly, but first, the big welcome is going to be by the Chairman and CEO of TV Asia. He's Mr. H.R. Shah, as most of you know, and our guests, I'd formally introduce you to him as the recipient for the year 2017 of one of India's highest civilian honors, the Padma Shri. So, Mr. Shah, would you please come up to say a few words? What Indian people are here in this country. We have before 1963, we have a 100 quota system. We can allow only 100 people come from India to here. After John F. Kennedy did 1963, they allow, you know that, 20,000. Due to 20,000 and H-1B1 visa, we have close to today 4 million people in USA. 4 million people in USA. And the people are doing various things in this country. Although you can see, out of that, 400,000 Indians are doing business in this country. 400,000 people. Different way. So you can see how much employment they're giving. I'll try my best to speak in Hindi. First of all, let me take this opportunity to thank TBSCA for organizing the event, to welcome the professionals, the US diplomats who are going to India. And let me welcome also the US diplomats who are going to India. On behalf of the government of India, I would like to welcome. हिंदी एक चीज़ है जो HR साहब ने बोल के गए हैं कि हिंदी इंडिया में जो इम्पोर्टेंस है, मैं आई विल बी रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि फॉरेन मिनिस्ट्री में हिंदी का क्या इम्पोर्टेंस है. बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले फॉरेन मिनिस्ट्री में एनी डॉक्यूमेंट आप सोचेंगे सारे इंग्लिश में. अभी हमारा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी किया है कि सपोज होस्ट गवर्नमेंट की विजिटिंग डिग्नेटरीज उनका लैंग्वेज में बोल रहे, देन हम लोग भी हिंदी में बोलेंगे. इंटरप्रेटर्स रहेंगे, मतलब उनका एक इंटरप्रेटर्स रहेगा हमारा लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके उनको बताने के लिए, हमारा इंटरप्रेटर रहेगा उनका लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके. सो इफ़ दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि ना वी नो आज HR से जो मेंशन कर रहे थे, इंडिया में 18 लैंग्वेज है, मोर देन 1000 डायलेक्ट्स है. सो जब हमारा रिसोर्सेस है, हम क्यों डरेंगे हिंदी में नहीं बोलने के लिए? दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, US डिप्लोमेट्स के देख के मेरा जो 17 साल पहले जो खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने खुद जा रहा था बर्लिन लैंग्वेज सीखने के लिए. बट आज आपको देख के लग रहा है कि आप तो हिंदी में पूरा इतना प्रॉम्प्ट होने के बाद में जा रहे हैं कि यू हैव द सम सेट ऑफ सेंस ऑफ द कंफर्टेबिलिटी. मैं तो जा रहा था बर्लिन में जाके जब जर्मन का जो अल्फ़ाबेट सीखने के लिए गया था, ऑल्दो 6 महीना 8 महीना में हमको पास करना पड़ता है, बट इट इज द कंफर्ट दैट यू हैव नाउ ट्रेमेंडस, यू वुड बी स्पीकिंग इन हिंदी. मैं सैल्यूट टू यू. सो हैविंग सेड दिस वन, आज देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्ट्री में हिंदी का एनुअल रिपोर्ट भी हमने हिंदी में पब्लिश कर रहे हैं. आज फॉरेन मिनिस्ट्री में देखिए, हर फाइल इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन हिंदी रिलेटेड, उसका भी हिंदी में प्रोसेसिंग होता है. एंड अभी हमारा कॉन्सुलेट में हम लोग सपोज बाइलिंगुअल हो गया ना, सिग्नेचर हम मार रहे हैं जो ईमेल में, उसमें नाम भी हिंदी में एंड इंग्लिश में, सो दैट की कोशिश कर रहे हैं कि इवन इफ ऑल्सो USA में इंग्लिश इज प्रीडोमिनेंट, फिर भी हम हिंदी को प्रमोशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं.
अगर हिंदी को समझना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं हिंदी का प्रसार करना है, प्रचार करना है, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी का प्रयोग करें। अंग्रेज़ी का प्रयोग करके या किसी और भाषा का प्रयोग करके हम हिंदी की सेवा नहीं कर पाएंगे। All I am going to talk about today, I am very happy to learn that the US diplomats have learned Hindi. Even though we are grown up in a state or neighboring state where they are speaking Hindi, but we are not able to speak fluent Hindi. Okay? But you will be able to understand what we are trying to imply. That is my guarantee to you. So when the one gentleman, one US diplomat asked me, do you speak Hindi? I said, I speak Hindi, you will definitely understand. So I say, okay, let me speak a couple of lines. So he was laughing. I said, that is what we speak. Because that is what we speak. So your aim is to make sure you understand correctly. Try to don't misunderstand it so that you create some problem in the future for somebody else in the consular services. But anyway, talking about our culture of India, I say, of course, our national culture is a fantastic. We have a Christian, we have a Hindu, we have a Muslim, we have a Sikh, everybody is there. Everybody have their own social agenda, everybody have their own social culture. But when coming to India, for example, Diwali, the whole country is celebrating Diwali. Vaishakhi, everybody is having fantastic enjoyment because of everybody celebrating our culture.